Hi everyone, welcome to EduTap. So this session is a very special session where I would be telling you one trick on phase 2 answer writing. Now this one trick is not the entire solution to write good answers. Please do not accept that from this session. But I know one of the struggling areas of yours and I am giving this trick only in relation to that. ठीक है. तो अभी फेज टू आंसर राइटिंग में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग इज के सर अभी जैसे ईएसआई में हमने आंसर लिखना है. अब ईएसआई के आंसर में वी ऑल नो दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन करंट अफेयर्स. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यू आर रीडिंग सो मेनी करंट अफेयर्स and they are not consolidated, and then therefore it becomes really difficult for you के इतने सारे current affairs में से what you have to write here, how do you remember that? That is the main problem, right? So with respect to that, I would be telling you one trick. Please understand it in the next 10 minutes and I'm sure that you will get a big relief with respect to your descriptive writing in phase 2. ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो देखिए, you are reading a lot of current affairs. Now you are thinking कि मुझे इतना कुछ पता है, अरे मैं एग्जाम में इतने सारे पॉइंट्स कैसे लिखूं, कैसे याद रखूं? But that is not the point. It is you who knows that you know so much of the data. Examiner is not expecting that you will be writing all the data in the exam, right? It is just expecting some minimum 5-6 points, right, which gel with your overall answer and contain some data, some trends, so that he can get a good feeling that you know about what is happening. So ये आपको पता है कि आपने इतना पढ़ लिया है, एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. सो आपको सारा ना तो लिखना है, ना ही पॉसिबल है याद रखना. सो आप उसको भूल जाइए कि आपने इतना सारा पढ़ लिया है. नाउ हाउ डू यू फिल्टर आउट, हाउ डू यू रिमेंबर हाउ टू राइट दिस, ये आपको भूल जाना है. आपको क्या करना है, आपको हर टॉपिक पे, ऑन एवरी टॉपिक, अब ये हर टॉपिक कौन सा हो सकता है? इट कैन बी बेसिकली योर से एजुकेशन. This is one topic in your syllabus, right? Another can be say health, then it can be gender issues. So likewise there can be many topics that you can shortlist, right? Now in each of these topics or on each of these topics you have to write around 10 points, just 10 points, and those 10 points are related to data in the current affairs, and those 10 points can be very general. ठीक है, एक डेटा हो सकता है उस चीज पे जो बहुत ही नॉर्मल डेटा है, किसी रिपोर्ट का डेटा हो सकता है, किसी स्कीम का डेटा हो सकता है. दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू. अगेन द पॉइंट इज नॉट दैट व्हाट यू आर मिसिंग, द पॉइंट इज व्हाट यू आर रिमेंबरिंग, व्हाट यू आर राइटिंग, दैट्स इट. ठीक है, तो आपने एक टॉपिक ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक एजुकेशन टॉपिक ले लिया है. ध्यान से सुनिए, अब मैंने इस एजुकेशन टॉपिक पे यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं, तो इट शुड बी 10, राइट? मैं आपको 10 पॉइंट्स लिखने को कह रहा हूं. These can be any 10 points. Now don't find out कि सर वो 10 points कौन से होंगे, क्या होंगे. These can be any general data but correct one related to education. तो मैंने एक तो सेंसस का लिख लिया. अब आप किसी रिपोर्ट्स का या किसी एजेंसीज का लिखेंगे, वही एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा ना. सो मैंने एक सेंसस का ले लिया दैट एज पर 2011 सेंसस 73% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरेट, वेयर एज 81% फॉर मेल्स एंड 65% फॉर फीमेल्स. ये सेंसस कहता है कि 73% पॉपुलेशन लिटरेट थी, 81% मेल्स थे और 65% फीमेल्स थे. और ये डेटा मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल करेक्ट है, आप उस पर मत जाइए. एक एग्जाम्पल लीजिए, मे बी मैंने 73% गलत लिख लिया है, मे बी इट इज 68% और 79%. डोंट गो टू दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो ये आपने एक डेटा लिख लिया, ठीक है. अब ये यूज कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा. नेक्स्ट आपने एक एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन का डेटा लिख लिया विच सर्वेड एंड इट फाउंड दैट लिटरेसी रेट इज 77.7% एज पर 2017-18. And this survey says that this is a marked improvement of our literacy rate which was 40% in 1981. उसके comparatively बहुत improve हुई है. This survey is saying 40% overall literacy rate was there is in 1981, 53% males were literate and 29% females were literate in 1981. ये सेकंड पॉइंट है कि जी 1981 में तो बहुत बुरा हाल था, अभी 2017-18 में वी आर ऑलमोस्ट लाइक 78% लिटरेट. फिर मैंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट का डेटा उठा लिया, एसर रिपोर्ट 2022. ये आप कोई भी रिपोर्ट्स उठा लीजिए,
क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में डजेंट मैटर आपने एक्स रिपोर्ट को मेंशन किया है, वाई रिपोर्ट को मेंशन किया, एज लॉन्ग एज बोथ द रिपोर्ट्स आर रिलीज बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर ऑफ स्टेचर, जिनको हम मतलब मानते हैं। अब आपने लिख लिया जी मेरे पड़ोस में एक एजेंसी है उसने रिलीज किया है, देन नोबडी इज गोइंग टू गिव यू वेट फॉर दैट. So this report says that there is a decline in the basic reading and arithmetic skills of young children in class 3 and 5 in India. मैंने लिख लिया, मुझे मिला, मैंने लिख लिया. I'll see how to use that. फिर मैंने एसर रिपोर्ट का ये एक पॉइंट लिख लिया दैट ओनली 68.4% हैड टॉयलेट फॉर गर्ल्स इतने स्कूल्स में. इट ऑल्सो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर 66.4 इन 2018. ये भी लिख लिया जी हमने. फिर मैंने एक रूरल का भी लिख लिया जी कि जस्ट 4% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स एज कंपेयर टू 23% इन अर्बन, एंड ओनली 38% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैव सेकेंडरी स्कूल इन रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर एज कंपेयर टू अर्बन हाउस होल्ड ऑफ 70%. कि रूरल में सिर्फ 4% लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, वेरएज अर्बन में 23% के पास, और रूरल हाउस होल्ड में around 38% people have schools within their 1 kilometer radius, secondary schools, whereas urban में 70% लोगों को 1 किलोमीटर के रेडियस में सेकेंडरी स्कूल है. तो मैंने सिर्फ 5 ही लिए टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आप ऐसे 10 पॉइंट लिख लीजिए फ्रॉम डिफरेंट रिपोर्ट स्कीम्स एक्सेट्रा, वॉट एवर यू फाइंड, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है. बट हाँ, यहाँ पे जब आप डेटा लिख रहे हैं देन ट्राई टू एड्रेस सम डायमेंशंस. अभी एजुकेशन में जो क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप सोचेंगे, अगर मैं सोच पा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक तो बहुत जनरिक आ सकता है कि एजुकेशन ओवरऑल इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं. या फिर एजुकेशन का क्वेश्चन आ सकता है जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, कि एजुकेशन में बहुत सारा जेंडर गैप है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है. या फिर आ सकता है रूरल अर्बन के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, ये कुछ चीजें जो मैं सोच पा रहा हूं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप इस डेटा को थोड़ा रेलेवेंट बना पाएंगे फॉर एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम. तो मैंने यहाँ पे कुछ रूरल अर्बन का भी लिख लिया, कुछ जेंडर का भी लिख लिया. अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेल्स फीमेल्स का लिख लिया है, 81% मेल्स एंड 65% फीमेल्स. फिर टॉयलेट्स के ऊपर लिख लिया, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ जेंडर गैप. तो मैंने इन सारी डायमेंशंस पे, एजुकेशन इन जनरल, जेंडर गैप और रूरल अर्बन पे, मैंने ये डेटा लिख लिया. अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, ऐसे ही आप कुछ स्कीम्स पे डेटा लिख सकते हैं. ठीक है, जनरली स्कीम्स में जो आपको डेटा मिलेगा दैट विल शो ओनली पॉजिटिव ट्रेंड्स बिकॉज स्कीम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट. बट येस, ऑन सम अदर वेबसाइट्स यू कैन फाइंड सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो, जो यहाँ पे आप ऐसे जनरल डेटा में ऐड कर सकते हैं. नाउ हाउ टू यूज दिस डेटा, राइट नाउ आई बिलीव कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपने डेटा जनरल फाइंड कर लिया एज पर डायमेंशंस के, एजुकेशन जनरल के ऊपर, थोड़ा जेंडर ओरिएंटेड, थोड़ा रूरल अर्बन ओरिएंटेड. उसके बाद अब डेटा यूज हो सकता है, आपको यूज करना आना चाहिए irrespective of what is the question. Now suppose this is the first question, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूं. Indian education system has made improvements in the area of girl education, comment. अब first of all it will depend upon your view whether you want to comment it in a positive way, yes the system has made improvements, or you want to criticize it, no the system has not made improvements. That depends upon you. But you from this data can write both the views depending upon how do you see it. So if you want to write positive, your view is positive, right, then you can write that yes it has made improvements in the area of girl education, and we can see this from this data because 1981 में less than 30% of the females were kind of literate, whereas in 2011 as per census we have 65% of the females who are literate. So obviously we have made some improvements, right? So मैं इसी डेटा से सारा कुछ निकालूंगा. एंड यू कैन अगेन राइट के टॉयलेट्स जो कि बहुत पहले नेग्लिजिबल होते थे, 2018 में 66.4% हो गए स्कूल्स हैविंग टॉयलेट्स, एंड देन 2022 में, ये 2022 का डेटा है, 68.4 हो गए अराउंड. अब आप में एक चीज का ध्यान रखना है कि डेटा तो आप इससे पॉजिटिव करके लिख देंगे, लेकिन जो भी डेटा आप लिखेंगे आपको कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखना. यू डोंट हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेटा 29.3 30.4. यू ऑलवेज राइट, जैसे यहाँ पे लेस देन है, यू कैन राइट लेस देन 30% फीमेल्स वर लिटरेट इन 1981 टू अराउंड 65%. तो मैंने लेस देन, अराउंड, अबाउट ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं. डू नॉट ट्राई टू राइट द एग्जैक्ट डेटा और इवन रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, दैट कैन बी रियली चैलेंजिंग फॉर यू. लेकिन अगर आपका नेगेटिव व्यू है, आप इसी को चेंज कर सकते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट कि still though we have made improvements but still there is a
gender gap, right? In terms that still only 65% females are found to be literate as compared to 80% males, which shows that males has more access to education. And then this point you can also portray in a negative sense that in 2022 or 2023, right now it's 2023, when we are aspiring to become a $5 trillion economy, less than 70% schools have toilet for girls. Come on. So again, I'm telling you this data, using just this data, which you will write in 5 to 10 points, you can damn push data depending upon the context of the question and your opinion on the question. Similarly, let me take one more question. Suppose the question is that Indian education system needs a total revamp to meet the needs of growing economic comment. अब ये जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दिस इज ओवरऑल अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीडिंग अ रिवैम्प कमेंट. Now here also you can have any view. If you have a positive view, you can write that yes, that Indian education system has improved a lot, and I don't believe that it needs a total revamp. It's working well, because from 41% literacy rate in 1981 to 73% in 2011, that's a huge step, and that population is really big. So that's commendable that we have improved by such percentage. Then you can also write this point that we overall have not only made improvement in the education system, but especially when we see about the gender equality, lot of girls are being educated and given facilities. Now around 68.4% schools are having toilet as per 2022 ASER report survey, right, which would have been negligible in the year of 1980s, and this is a marked improvement as compared to 66.4 in 2018. So this is the way you can portray this data. And similarly, if you want to sound negative on this, that yes, it needs a total revamp, then you can say that still only around 75% of the people are literate, and we are aspiring to become a developed economy, whereas in developed economy the literacy rates are near about 100%, so we are lagging behind. Then we can also mention that year by year we can see the decline in basic reading and arithmetic skills of young children, which does not portray as good for the future. So again, the point I want to tell you कि आप टेंशन मत लो यार कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स डेटा याद करने हैं. आप कोई 10 डेटा पॉइंट्स याद रखो, दिस कैन बी एनी, एंड ट्राई टू लर्न दैट हाउ टू फिट देम इन द कॉन्टेक्स्ट. एग्जामिनर इज नॉट नोइंग कि आपको क्या नहीं आता है, उसको सिर्फ वो दिख रहा है जो आपको आता है, दैट्स इट. और अगर आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स का डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डेटा जैसे सेंसस है, सर्वेज हैं, डाल देंगे, सो ही वुड बी हैप्पी टू गिव यू मार्क्स. तो लाइक दिस यू कैन आंसर डिफरेंट क्वेश्चन. सो द ओवरऑल रूल्स आर दैट यू मेक वन पेजर डेटा. आप सिर्फ एक पेज पे, do not make it online, I think make it a hard copy, just make one pager data containing 10 points on all the topics. हर टॉपिक पे एक पेज का डेटा containing 10 points you would have to make, and do not try to exact right data in the question. उससे अगर आपने गलत लिख दिया तो मार्क्स कट सकते हैं. Instead always try to write less than, more than, around, about, the ballpark figure. और कभी आप अगर नेगेटिव डेटा दे रहे हैं, दिस इज जस्ट एन caution to you that do try to express some optimism, because at the end of the day you're kind of working for the government, right? You want to deliver and you want to take this nation forward, so you have to show some optimism. So always show some optimism, at least in the conclusion, if overall you have been negative, by mentioning some positive data. और जब भी आप डेटा इकट्ठा करें, जैसा मैंने आपको बताया, ट्राई टू इंक्लूड वेरियस डिमेंशंस. एक तो एजुकेशन इन जनरल आपने कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया, देन ऑल्सो ट्राई टू सी वेरियस डिमेंशंस कि ठीक है, एजुकेशन में जेंडर गैप एक प्रॉब्लम है, उस पर डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ. रूरल अर्बन डिवाइड एक प्रॉब्लम है, उस पर डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ. सो इट्स बेटर दैट if you can find 2-3 dimensions at the start itself, you would be able to say divide your data into different dimensions, so that you can even handle more types of questions with that data. And whenever you mention data, though here I have not mentioned, right, I have just given you examples, 30%, but I would like you to write data by mentioning the source. So you should be writing like this, that as per ASER report on education 2022, right, 66.4
4% ऐसा करके mention the exact source, because just imagine you're just mentioning the numbers without the source, it will not lend much credibility to your numbers. But if you're mentioning the source, then it will lend so much credibility and so much authenticity of what you are writing. So please remember that mention the exact name of the source. It's very very mandatory. ठीक है, तो इन कुछ रूल्स को फॉलो करना है. बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है आपकी प्रिपरेशन में गाइस, सो वी कैन हेल्प यू विद दैट. आई एम कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ वर्कशॉप वेयर वी आर हेल्पिंग पीपल to get over their anxiousness, to get over their fears, and we can help you cut down your preparation time by around 50%. So we are conducting a live strategy workshop, the details of which you can get to know by clicking on the link below. ठीक है, in the description of this video, तो आप उस वहाँ पे जाके you can get to know all about this RBI Grade B Domination workshop, where we will be helping you that how can you not only crack, rather dominate this exam by cutting your preparation time by 50% and setting a clear roadmap and a perfect strategy to crack this exam. And this workshop is entirely free. This is live for 2-3 hours where I will be handling A to Z of dominating the RBI Grade B exam. So reserve your seat for zero fee. And how can you reserve it? By clicking on the link, right, which is given in the description of this video. And this workshop might change your life, might save you hundreds of hours, might give you a career which you have been dreaming of. So thank you guys, have a nice day. And if you found this trick useful, do let me know by commenting in the comment section that yes sir, I like this trick, give me more tricks like this. If you like this trick, you have to comment that yes sir, I like this trick, give me more tricks like this. Have a nice day, bye bye, Jai Hind.